Hi there guys, welcome back to my channel Glossips। जैसे कि आपको पता है रमज़ान ख़त्म होने वाला है और ईद आने वाली है, ईदी भी मिलने वाली है। Now I got all of this makeup from one place. I'll be linking it down in the description box. And no, they haven't sponsored my video. I wish they would have. It would have saved me so much money. But yeah, it's all a genuine recommendation to you guys. You guys wanted me to make it a little simpler for you guys. तो मैंने इस look को बहुत simple करके समझाया इस video में. There's nothing difficult about it. And yeah, because most of you wanted me to add a red tinge to a look with black, so I applied the classic red lipstick for this look. So if you like this makeup look and you like the video, do not forget to give this a thumbs up. Do not forget to subscribe to my channel, and yeah, don't forget to give me some comment love down below. There's a little teeny weeny bit surprise waiting for you guys by the end of the video, so don't forget to watch it till the end to get to know about the surprise. We'll start off with priming our face, and today I'm using the Maybelline Gigi Hadid primer, and I'm really excited to try this out. This has a very thin texture, and it looked like this is going to be very dark on my skin, but I'm glad it just blended in really easily. So thank God for that. But I probably would go for a lighter shade next time. Surely minimized the pores which are very visible and makes my skin look better. Okay, so I was so excited to try this one out. This is the Maybelline Dream Velvet Foundation, and I'm in the color 40 Nude, and I've been really excited to try this one out. So it blended on really easily and makes my skin feel like velvet for sure. That's what I'm glad about. The coverage is not that high, but I think it is amazing for an everyday wear because the coverage is very natural looking and it literally feels like velvet. I'll just put like a second coat on the places which are like the trouble areas to make it work out better. Yeah, and it definitely does work out better in that way. Thank God. Like there's this big mark here. It never just covers up no matter what I do. Girls, now I'm going to take my Pro Conceal Concealer by LA Girl. This is the best concealer that I've put my hands on. I'm in the shade Creamy Beige. By the way, in सारी चीज़ों की सारी details I will mention in the description box where I got them from, etc. etc. अब मैं इसको एक उल्टे triangular motion में इस तरह से I'll just put it on my face. Like that. I look like a red Indian, I know. That's fine. Now I'm just going to take my beauty blender and quickly blend this out. This one blends like magic and I love it like crazy. I'm going to be using the e.l.f. Under Eye Setting Powder. Basically, जब भी आप concealer लगाते हो, क्योंकि वो liquid होता है, it definitely needs a powder to make it sit. So I'm just going to take the powder from this one, set my under eyes with it. Now because we used a liquid foundation और उसको भी set करने की ज़रूरत है, I'm going to take the L'Oreal Infallible का powder and just quickly set my face with it, क्योंकि जब भी हम कोई liquid चीज़ use करते हैं अपनी शक्ल के ऊपर, we need a powder form to fix it, to set it, to make it look, to lock it, more like make it permanent. So this is just me slightly permanentifying my face, and that's what I did. So now for the eyebrows, I'm using the Balm Key Ferocious Eye Pencil. This is the eyebrow pencil, and it's a really good pencil. It's so thin like this one, which is why I got it for myself. I'm just going to quickly fill in this part, then fill this part, open the spoolie up, and then I'm just going to brush it in so you guys can watch as I do it. Honestly, मैंने ये पहली दफ़ा यूज़ किया, बट मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि एकदम से इतनी अच्छी लग जाएंगी, बिकॉज आई एम नॉट इन प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग दिस. लेकिन ये इतनी अच्छी आईब्रोज बन गई हैं दैट आई एम एक्चुअली सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड, क्योंकि इसकी टिप बहुत पतली थी. सो इट मेड द आईब्रोज लुक सो गुड. आई एम ग्लैड. नाउ विल स्टार्ट ऑफ विद द आईज. लेकिन उससे पहले देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग.
I'm going to be using these 4 brushes for this eye makeup look. ये एक बहुत बड़ा blending brush है. ये एक थोड़े से अलग शेप का blending brush है. You guys can see that. ये एक fluffy सा blending brush है और ये एक बहुत tapered blending brush है. So basically हम इस किस्म के brushes use करेंगे for making an eye look like this one. And if you don't really have such brushes, सबसे पहले तो I'm going to link down in the description box कि ये Morphe का कौन सा brush set है, because when I was buying them for myself, I was also confused कि मैं कौन सा brush set लूँ जिसके अंदर मेरे सारे brushes cover हो सकें. So I will link it down in the description box कि ये कौन सा brush set है, और अगर आपको इसके जैसे दिखने वाले brushes मिलते हैं, so just get them from anywhere. That's another thing. Now I know कि सब बोलेंगे कि why this palette ये सबके पास नहीं है. खैर the thing is कि after the Morphe palettes, this was the other Morphe palette जो मैंने खरीदा, because इसके अंदर वो almost सारे colors हैं that one really needs to put on. You guys can see सारे pinky colors, सारे copper colors, reds, और ये कुछ hint of different colors और सारे browns वगैरह. सारे colors इस एक eye shadow palette में, which is why I extremely I'm in love with this palette. So this palette was basically an investment rather than spending too much money on makeup wali baat. So I love this palette. सबसे पहले तो we'll start off with using the LA Girl Pro Concealer onto my eye that you guys can see right now. ये एक बहुत अच्छी सी बेस क्रिएट कर देगा जिस पे हमारा आई शैडो बहुत अच्छी तरह से स्टिक हो सकता है और ब्लेंडिंग में कोई मसला नहीं होगा. That's how this works. अब मैं ये वाला पैलेट इसलिए भी यूज़ कर रही हूँ बिकॉज हमारे पास जो पैलेट्स मौजूद होते हैं जनरली भी उनमें ये सारे कलर्स होते हैं. सो व्हाट यू गोइंग टू डू इज़ यू गोइंग टू पिक अप अ कलर लाइक दिस वन फॉर अ ट्रांजिशन शेड. इफ़ यू डोंट हैव दिस पैलेट यू आर गोइंग टू यूज़ एनी आई शैडो इन एनी पैलेट अवेलेबल जिसके अंदर ये कलर हो. सो ये इस वाले बड़े ब्रश में लिया है बिकॉज आई एम जस्ट गोइंग टू पुट इन माई ट्रांजिशन शेड लाइक दैट सो दैट इट जस्ट ब्लेंड्स इन परफेक्टली. This is a really simple eyeshadow look. इसमें कुछ इतना मुश्किल नहीं है. Just follow me how I'm doing it and trust me you'll also do the same thing. तो जब ये एक बार इस तरह ट्रांजिशन कलर ब्लेंड हो गया, we're done with step number 1. अब मैं अपने किसी पैलेट से एक थोड़ा सा रेडिश थोड़ा सा ऑरेंजिश शेड, इन दोनों में से कोई एक शेड पिक करूँगी on this brush right here. So I'm going to pick this color right here. और इससे मैं अपनी आई लुक के अंदर थोड़ी सी डायमेंशन ऐड करूँगी. सो आई एम गोना टेक इट और मैं सिर्फ इस एरिया पे इसको लगाऊंगी क्योंकि हम अपने ऊपर जो ट्रांजिशन कलर हमने लगाया उसको ख़राब नहीं करना चाहते. लाइट तो मैं इसको बिल्कुल अपनी आईलिड के ऊपर ऊपर रखूँगी, ऊपर, एज ए नॉट ऑन माई आईलिड, ऑन टॉप ऑफ माई आईलिड. अभी एक मैंने बहुत ब्लंट अजीब सा एक लगा दिया इसको. Now I'm going to take my blending brush and I'm going to blend this in, making sure कि ये ज़्यादा ऊपर ना चला जाए वरना ये मेरे ट्रांजिशन कलर के साथ मिक्स हो जाएगा and I don't want that. So now that we've blended it in properly, we have this sort of a look achieved. मैं अपना कंसीलर लूँगी और उसके बाद अपनी आईलिड के शेप में इस कंसीलर को पूरी आईलिड के ऊपर लगा दूँगी. नीचे नीचे ही रखूँगी ताकि मैं अपने ब्रश से, एक ऐसे कंसीलर ब्रश से उसको प्रॉपर्ली शेप कर सकूँ. थोड़ा सा कम पड़ गया कंसीलर. आई एम जस्ट गोना पुट मोर. और ये वो एक हाफ मून टाइप शेप बन गया है. And that's exactly what we want. अब जैसे हमने ये किया है इससे क्या होगा कि हमारी आईलिड वाला जो एरिया वो बिल्कुल साफ हो गया है. हमारी जो ब्लेंडिंग है वो बिल्कुल एक तरीके से सेट हो गई है. मतलब कि इट लुक्स लाइक इट हैज़ बिन प्रॉपरली ब्लेंडेड. और जो भी कलर हम अपने आईलिड पे लगाएंगे अब वो बिल्कुल प्रोमिनेंट नज़र आएगा. वो किसी और ऊपर नीचे के कलर से मिक्स होके डल या डार्क नहीं नज़र आएगा. इट्स गोना लुक एग्जैक्टली हाउ इट लुक्स इन द पैन ऑफ योर आई शैडो पैलेट. Now I'm just going to take a black and a brown. इन दोनों को मैं मिक्स करूँगी. I'll first take the brownish color और मैं अपनी eyes के end पे लगाऊंगी because I want to make this look a little dramatic, a little bit more heavier. क्योंकि
सब लोग ईद पे जो अपने, क्योंकि हर कोई ईद पे अपने घर में नहीं बैठा होता. देयर आर पीपल हु आर मैरिड, देयर आर पीपल हु हैव इवेंट्स, डिनर्स, दे वांट टू ड्रेस अप मोर. सो दिस इज़ मोर फॉर देम, जिनको ज़्यादा तैयार होने का शौक होता है ईद पे. सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक दिस कलर राइट हेयर, और मैं इसको बहुत आराम से इधर अपनी आई के एंड पे लगाऊंगी. मैं इसको अपनी ज़्यादा सेंटर ऑफ द आई तक नहीं लेकर आऊँगी, बिकॉज दैट्स नॉट व्हाट वी वांट टू डू. आई एम जस्ट गोइंग टू कीप इट हियर. एंड एज यू गाइस कैन सी कि मैं इसको घसीट के नहीं लगा रही हूँ. आई एम लिटरली जस्ट डैबिंग इट ऑन. वंस आई हैव डन दिस, आई एम गोइंग टू क्लीन द ब्रश, और इसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करना शुरू कर दूंगी अपने आई मेकअप लुक के अंदर. हमने इस तरह से अपनी आई को थोड़ा सा स्मोकी लुक दे दिया. नाउ आई एम गोइंग टू पुट अ वेरी प्रिटी शिमर कलर इन दिस वन, एंड फॉर दैट आई एम गोइंग टू बी यूजिंग दिस न्यू फिजिशियंस फॉर्मूला eyeshadow palette. It is so pretty. Oh my god, you guys. Oopsie. So I'm going to choose a color somewhat between this one and this one. So I'll take both of the colors and see कि इनका look कैसा आता है, and then I'm going to choose. So ये वाला कौन सा था? ये वाला था. So इस वाले का जो look आया वो, why didn't it apply properly? Wait. Sorry. So this one और this one, they're pretty similar, लेकिन इसमें थोड़ा सा brown सा tinge है, और इसके अंदर सारा champagne white shimmer type का color है. So I think I'm going to take this one and then apply it onto my eyelids. So taking this color right here. I was so excited for this palette. I can't even start telling you guys कि मैं कितनी excited थी इस एक palette के लिए. Now I'm applying it onto the part that I've highlighted. एक बहुत प्यारा सा shimmery look दे रहा है, and I really like it. You guys can see इसकी shimmer कितने मज़े की है. और अब एक और सिंपल सा मूव है कि जो मैंने ट्रांजिशन शेड ऊपर लगाया था, मैं वही ट्रांजिशन शेड लूँगी और मैं अपने आईलिड के नीचे इसको लगा दूँगी. और ये हम इसलिए करते हैं बिकॉज एनी मेकअप लुक इज़ इनकम्प्लीट विदाउट फिलिंग द लोअर लैश लाइन. इसके ऊपर मैं आई लैशेज़ लगाऊँगी, एंड दिस लुक विल लुक dashing. I will just show you guys. So मैंने जल्दी से जाके इस वाली आई को भी बना लिया off camera, and trust me, it only took me like what, 2 minutes to do this eye as well. It's that simple, trust me when I say it. So there's nothing very difficult that you can't copy. So now I'm just going to put in some highlighter over here and here. By the way, these are the Glam Lashes by Glossips. Yes, I own my own eyelash brand as well, and these are coming out pretty soon. So yeah, if you don't know where to order my eyelashes, just add me up on Instagram and send me a DM. I will be replying to your DMs and telling you guys all about the lashes over there. For any makeup look, whenever the eyes are done, we're only left with a simple part of our makeup. So I'm going to take the Maybelline Master Strobe by Face Studio bronzer. You guys can see it is so pretty. This only costs for 1,000 rupees. I'm just going to quickly bronze my face with it. This is my first time using this bronzer. I bought this because of the color. It is such a pretty color and it suits complexions like mine. Now for all of those people who have a double chin, it's always important that you put some bronzer or contour powder or anything dark at this area. What it does is, जितनी भी double chins होती हैं किसी की भी, वो ख़त्म कर देता है. Trust me, I have a double chin. I know कि हाँ ठीक है, ख़त्म हो जाती है इससे. So makeup really works like magic in this way. Key highlighter, and this is the Master Fairy Highlight by Maybelline. You guys can check it out. It's the rainbow highlighter, and I'll show you guys. अच्छा, so I'm glad it worked really nicely. कोई open pores नहीं दिखा रहा, कुछ नहीं, and it's a very light sort of a natural looking glow. इतना भी natural looking नहीं है क्योंकि इतनी ज़ोर से कोई glow नहीं करता, but eventually it's a really beautiful glow. I had forgotten to put some mascara under my eyelashes, lower lash line पे. So this is the Luminous Lash Paradise mascara, and I think after the falsies, this is a mascara that I'm crazily in love with. If you guys don't know, it's a dupe for the Better Than Sex mascara. Oh, I said the word sex. Shh.
Nah, kidding. So this is a dupe for that mascara, just by the way. Now I'm going to take my blush on, which is by ELF. This is in the color Shy. You guys can see it's such a pretty color. Oh my god, I was in love with it when I was getting it for myself. This is such a pretty pink color. And yes, I always put on my blush on after I highlight because it makes the whole highlight and blush on mix into such a pretty color, and wow, I just love it. Now the last thing. अच्छा, so हम सबको ये तो पता है that the lip color actually makes our look or breaks it. अब इस makeup tutorial के लिए मैंने जो lip color अपने लिए लिया था was basically a very bright red. लेकिन अगर हम इस lip color इस makeup के साथ if we put a very nude lip color तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा. But because all of you were requesting me to use a red something in my makeup look, and also मैं nude color ज़्यादा नहीं लगाऊँ because it makes all my looks look very natural and different. So I'm just going to use this color right here. This is for you guys. इसके लिए मुझे नहीं मारना because you know like मैं इतने bright colors नहीं use करती, but I'm using it for you guys because you wanted me to add a red into the lip color for this look. So dark. So when it comes to dark colors like this one, I love the Meet Matte hues by the Balm का जो पूरा collection है. I love it because they're the best sort of mattes ever. क्योंकि you put them on, you eat, you drink, you do whatever you want, it's not coming off. So for reds, I basically love these, and this is in the shade Loyal. Now obviously you guys have figured that this is the end of the video, and now is the time for that little surprise that I spoke about. So I'm going to be hosting a teeny weeny bit of a giveaway on my Instagram. So do not forget to add me up on my Instagram, which is at the name of Glossips. So is my Snapchat and my Twitter and every other social media handle that you can talk about. And yeah, don't forget to enter and win something good for yourselves. And I hope you guys liked this video. Catch you guys in my next one. Bye!